So very warm welcome to all and welcome all to today's session. My name is Rohit and I'll be your host on this for this session. I'm having with me Mr. Karan Pai and Ashish Shetty who will be walking you through about the technical analysis and giving you the brief about the how the technical analysis works and how the trends works. What is open high low close? So in this entire week we have covered about the open high low close, about the bar charts and about the area line charts and the candlestick charts. So I'm having with me Mr. Karan Pai who will going to throw some lights on the technical analysis. So this will be the power pack 30-minute session. Also next week again we'll be covering the session at the same time on Friday at 2:30 p.m. about the some more advanced indicators, some more about the patterns, about how you have to look out the trends, how you have to look out the support resistance. So with this, I'll hand over my session to Mr. Karan Pai. Karan, all over to you. Thank you for that introduction, Rohit. So जैसे रोहित ने एक्सप्लेन किया, so over the weeks आपने देखा होगा कि हम लोगों ने एक नया चीज चालू किया था with respect to concept of the day. So just give me a second. So concept of the day अगर आपने देखा होगा, so this month since the start of December we have been sharing something called something on technical analysis every day. So ये concept of the day आपको कैसे helpful होगा? This is for absolute beginners who are absolutely new in the markets and starting हम लोगों ने इससे किया है with regards to charts. सो चार्ट्स आपको जैसे पता होगा कि टेक्निकल्स का एक बेसिक या जो फाउंडेशन होता है दैट इज चार्ट्स. सो वी आई जस्ट शेयर द स्क्रीन. Just give me a second. So by the time the screen is shared, I would like to ask the audience, since have you all heard of any kind of charts? What are different kind of charts that you have heard of? Can you all put it up in the chat, please? Just whatever you heard of. Nothing right, nothing wrong. Anyone? So we are having that one chat that is they have heard about it, but how to analyze it, it's a bit difficult right now. Great. So the reason for our technical analysis sessions are to make you understand how to analyze the price patterns and the various chart formations. So different kind of chart patterns, charts which are there is namely, Karan, if you just, as I say, could you just show them, I'm sorry, what are different chart patterns? So this is known as candlestick patterns, which Karan will be covering today. Then there are line charts. Karan, line charts, please. So the name itself is explanatory. So it is line charts is formed by just joining the closing prices of every day. So a straight graphical line. Then you have the bar charts. Bar charts are similar to the candlestick charts, just that they are straight lines and candlesticks have bodies. Price points are open, high, low, close for both of them. Then you have something called as Heikin-Ashi charts, which is again a derivative of the candlestick charts based on different calculations. And one kind of charting method which I would mention particularly close to me, not many use it, is the point and figure charts. Right? Point and figure charts is a noiseless chart. It does not take the number of days into consideration. It is only on a particular price movement that the charts change. A bit complex to study, but as of now, we would cover with candlestick patterns, right? Yeah. Candlestick charts. We are आज के दिन में हम लोग basically हम लोगों ने during the week जितना भी concept of the day launch किया है. So just based on that हम लोग एक brief explanation देंगे. So आपने concept of the day अगर आप properly जाते हो तो हम लोगों ने उसमें mention किया था कि technical analysis का जो basic foundation है that is the chart. Chart कैसे plot होता है? Chart is plotted using the price data. सो आप जब भी प्राइस डेटा देखोगे सो देर आर 4 डेटा पॉइंट्स इन अ डे. अगर आप समझिए 1 डे का चार्ट देख रहे हो तो उसमें आपको 4 डेटा पॉइंट्स मिलेंगे. वो 4 डेटा पॉइंट्स क्या है? एक तो सबसे पहले कि एक पर्टिकुलर स्टॉक या मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ, कॉल्ड द ओपन प्राइस. देन वो दिन का वो पर्टिकुलर डे का हाई क्या था, कॉल्ड द हाई प्राइस. उस दिन का लो क्या था, कॉल्ड द लो प्राइस. एंड देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ क्लोज प्राइस, कि मतलब मार्केट फाइनली सेटल कहाँ पे हुआ. सो अगर मैं निफ्टी की अगर आज के लिए बात करूं,
So what I would say is not आज के लिए, I will say कल के लिए, because कल का पूरा डेटा है हम लोग के पास. So जैसे ही आप वो पर्टिकुलर कैंडल पॉइंट पे आप रखोगे, ऊपर की तरफ आप देख सकते हो कि there is something called as OHLC data. Correct. So that essentially is open, high, low, close. So कल के सेशन का अगर मैं लूँ, कल के सेशन का अगर मैं देखूँ तो 24,539 was the open price. मतलब that is where the trading actually started. And then you have the high कि मतलब during the day what is the highest price that was clocked. What is the highest price that was clocked? That is the high. And then you have the low. That is the lowest price that was clocked. And then close की close मतलब at 3:30 market कहाँ पे settle हुआ. Correct. So these are the 4 data points. अगर आप एक कैंडल देख रहे हो, वो कैंडल के periodicity के बेस पर there are 4 data points that are available at any time. Now अभी for example मैं I showed you the chart for 1 day. I'll show it to you for 1 hour. Just give me a second. 1 hour के चार्ट में भी आप देखोगे, for every candle there are 4 data points. You have the open of the hour, you have the high that was clocked in the hour, the low that was clocked in the hour, and then the price at which it settled in that particular hour. So that is basically open, high, low, close for that particular candle. So basically करण ये बोलना चाहते हैं कि आप टाइम फ्रेम कुछ भी चूज करो, आप डे चूज करो, आवर्ली चूज करो, वीकली चूज करो, यू चूज मंथली. सो उस महीने का या डे का या आवर का जो ओपन है वो ओपन होगा. द हाई उस पीरियड के अंदर इज द हाई, लो एंड क्लोज. सो हर पीरियड का ओपन, हाई, लो, क्लोज बन के आपका कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है. बार चार्ट एंड कैंडलस्टिक चार्ट में इतना ही डिफरेंस है कि बार चार्ट सिर्फ लाइंस होते हैं एंड कैंडलस्टिक चार्ट्स में देयर इज अ बॉडी. अगर आप देखोगे मोमबत्ती जैसे हम बोलते हैं, इट लुक्स लाइक अ कैंडल. दैट्स द रीजन कैंडलस्टिक चार्ट्स. So जैसे आशीष ने मेंशन किया कि बार चार्ट्स एंड कैंडल का जो एक सिमिलैरिटी है. So now that we know कि there are 4 data points, we'll look at the type of charts, the commonly used charts. So जब भी आप चार्ट बोलते हो, you might be very familiar with the line chart. ये चार्ट आपने schools में भी बनाए होंगे. We have seen these charts on multiple occasions. But can someone tell me ये चार्ट में क्या ऐसा स्पेशल है या क्या ऐसा कम है when you compare it to candle charts? Now candle charts, I am assuming everybody, almost everybody who is pursuing technical analysis knows what candle is. So जैसे अभी जो हम लोगों ने चार्ट दिखाया था, that was a candle chart. Candle chart में and ये चार्ट में what is the basic difference? If someone can point that out. We just gave out the hint at the start of the session. I started with that particular thing. Let's see how many of us are attentive and catching on to what we are saying. So those who are attending this session from our WebEx channel, they can type in the chat box, and those who are attending this session from our YouTube channel, so there is a live chat section is there, and you can click there and you can post your queries. Do remember this is for the educational purpose, so it is nothing related to the trading. So we are teaching you about how the technical analysis works by our research analyst, that is Mr. Karan Pai and Ashish Shetty. So for those of you who might have noticed कि ये चार्ट में 4 डेटा पॉइंट नहीं है, ये चार्ट में सिर्फ एक ही डेटा पॉइंट है. So when we are talking about a line chart, line कैसे प्लॉट होता है? Line is plotted by connecting 2 points or 2 dots. So for every close of that particular periodicity there is a dot, and वो डॉट को प्रीवियस डॉट के साथ या उसके प्रीवियस डॉट्स के साथ ज्वाइन करके you make a line. So line अगर मैं आपको simple words में बोलूँ, how would you plot a line? I'll just open up Paint. So this, just give me a second. So this is a point. This is a point. This is a point. This is a point. Now, how will you draw a line? तो ये 2 points को when you join, it becomes a line. ये 2 points, sorry, yeah. And ये 2 points को when you join, it becomes a line. ये 2 points को जब आप join करते हो, it becomes a line. A line chart is very similar to this. Now, instead of taking it as a point, आप ये consider कर लीजिए कि ये जितने भी points है, they are the closing prices of that particular period. Yeah, it can, I call it period because it can be day, it can be a minute, it can be an hour, it can be month, week, whatever. Technical analysis is very granular in that nature. Granular जब मैं बोलूँ कि मतलब so classical, मुझे इसका example जब भी मैं देता हूँ, मुझे एक ही चीज़ याद आती है. That is how you can drive any car once you learn to drive one car. Correct. आपको अगर एक मारुति 800 चलाने को आ गया, then you can also drive a Mercedes.
So that is what I mean when I say granular. मतलब आपने अगर चार्ट रीडिंग 1 आवर या डेली के चार्ट में सीख लिया, वो सेम लॉजिक लगाकर यू कैन एनालाइज द 1 मिनट चार्ट, यू कैन एनालाइज द 5 मिनट चार्ट, यू कैन एनालाइज चार्ट्स फॉर निफ्टी, गोल्ड, any asset class, any periodicity. Even the most controversial asset class, Bitcoin, can Yeah. be analyzed using price action and charts. Yeah. So so basically जब मैं लाइन चार्ट की बात करूं, it is basically drawn by connecting multiple dots. So that is what gives it that smooth nature. अभी इसमें अगर आप देखोगे ये चार्ट में, दिस इज निफ्टी डेली चार्ट, करेक्ट. सो इसमें आप देखोगे देयर इज नो नॉइज बिकॉज इट जस्ट शोज कि एवरी पर्टिकुलर डे प्राइस कहां पर क्लोज हुआ है. This shows कि say for example on the 26th of September close was 26,216. The next day अगर आप देखोगे which is 27th September close was 26,178. ये दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके there is a line. So there are multiple fractals या multiple fragments. अगर आप ये लाइन चार्ट को अगर डिवाइड करना चाहते हो, you can divide it in multiple fragments. मतलब दो पॉइंट्स ज्वाइन करके it becomes a line, तीन पॉइंट ज्वाइन करके it becomes a line, and then वो continuous line it becomes a price chart. So basically line chart, I know I'm repeating myself, but line chart तब बनता है जब आपके multiple points आप connect करके बनाते हो. Okay, now अगर आपको सिर्फ बताएगा कि निफ्टी ऑन अ डेली बेसिस क्लोज कहाँ पे हुआ. अभी आपको जानना है कि उस दिन ओपन कहाँ पे हुआ, क्लोज कहाँ पे हुआ, हाई क्या था, लो क्या था. That is when you move to something called as a bar chart. Now बार अगर आप ऑब्जर्व करोगे, there is a dash on the left, a dash on the right, a bit of high and bit of low. मतलब high and low मतलब इसमें थोड़े ऊपर एंड नीचे कैंडल्स जैसे विक्स है, करेक्ट. नाउ व्हाट डज दिस सजेस्ट. अगर आपने हमारा वो पीडीएफ खोल कर देखा होगा, देन यू वुड नो वी हैड एक्सप्लेन्ड द देयर इज अभी ऑफ कोर्स नाउ देयर इज वन मोर टेक्निकलिटी इन बार चार्ट. So that I'll cover first. So bar chart on a particular day, is it only negative or positive? मेरे को इसका जवाब दीजिए. So someone has asked, yeah, how to differentiate the colors. So we'll जैसे आपने निफ्टी में देखा, हम लोग के लाइन चार्ट में देखा, there have been downfalls, there have been upfalls, up moves, downfalls. So do you think कि अगर मैं इसे चार डेटा पॉइंट्स में इसको डिवाइड करूं, डू यू थिंक देयर इज गोइंग टू बी एनी पेक्युलरिटी इन द कैंडल्स? हाउ वुड यू डिफरेंशिएट कि ये पर्टिकुलर दिन ऊपर था, ये पर्टिकुलर दिन नीचे था? टेक फॉर एग्जांपल द 22 नवंबर 2024 का कैंडल. सो यहां पर आप देखोगे, आई विल जस्ट जूम इनटू दैट चार्ट. या सो आई होप दिस इज क्वाइट विजिबल. देयर इज अ स्मॉल लाइन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, then there is a big straight line, and then right hand side maybe there is a small horizontal line. So the small side is basically the price at which the underlying opened, now underlying in this case being nifty. ये पॉइंट पर निफ्टी ओपन हुआ, दैट इज 23,400. एंड देन ये जो जितना भी बड़ा आप बीच में लाइन देख रहे हो, हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हो, वर्टिकल लाइन आप बीच में जो भी देख रहे हो, दैट इज बेसिकली द हाई एंड द लो ऑफ दैट पर्टिकुलर डे. एंड देन वी कम टू द क्लोज इज बेसिकली समथिंग ऑन द राइट हैंड साइड. सो अभी मुझे अगर देखना है कि ये दिन का बेसिकली मूवमेंट कितना था, सो मैं ये बोलूंगा कि इट ओपनड एट 23,412, करेक्ट. उस दिन का लो यहाँ पर रिकॉर्ड हुआ था, दैट वाज 23,364. Then the market actually saw some buying. It moved higher towards 23,951, and finally, after all this volatility, after all this continuous up and down moves, we saw it close at 23,900. Now, similarly, let us take a negative day. Now, okay. So I'll ask one more question here. Now that the market opened at 23,411 and closed at 23,907. What do you think? Was it a positive day or a negative day? It's a pretty simple answer. Yes, the answer is absolutely right. Positive day tha. Matlab it opened lower and ended higher. Now let us look at another scenario. Now I am not sure if you guys are able to see, but there is a color distinction between both these candles. One is green and one is red. So अगर आप say for example 28th नवंबर का अगर आप प्राइस एक्शन देखोगे, the market opened at 24,274, correct. It tested a high of 24,345.
देन उस दिन का लो कैप्चर हुआ एट 23,800, somewhere around 873 900, but and then the it finally closed at 23,914. सो बेसिकली यहाँ पर आपने देखा कि आपका जो लेफ्ट हैंड साइड का जो एक डैश है या एक मार्किंग है, दैट इज एक्चुअली मच हायर देन द राइट हैंड साइड मार्किंग, करेक्ट. सो इट बेसिकली सेज दैट द मार्केट ओपनड हायर, traded in the range, and then it settled lower. So I hope, okay, यहाँ तक we've touched base on line charts, we've touched base on bar charts. यहाँ तक किसी को कुछ query है, कुछ doubt है, कुछ पूछना है, बोलना है, now is the right time. We'll pause for a minute or so, and then we'll continue with candle charts. Now candle charts का write up आज के दिन में आपको आ जाएगा, but we are covering it because okay, so far none. Okay, now it's good to see that one particular person is really active. It actually kind of motivates us. जब लोगों का participation आता है, it actually means that people are listening to you. So we feel good when we receive feedbacks like this. Now we'll go on to something called as candle charts. Now when you look at candle, now हम लोगों ने 22nd नवंबर का देखा था and 28th नवंबर का देखा था. जब भी आप ये कैंडल चार्ट्स को देखो, सबसे पहले आपके ध्यान में वही आएगा कि द बॉडी, मतलब जो जो कैंडल का जो शेप है, इट एक्चुअली काइंड ऑफ रिजेंबल्स द एन एक्चुअल कैंडल. नाउ वो जो मोमबत्ती आप जो घर पे देखते हो, इट रिजेंबल्स दैट. नाउ इफ यू सी ऑन द 22nd नवंबर 2024 का अगर आप वो वाला कैंडल देखोगे, यू सी दैट द ओपन वाज एट 411. मतलब ये पॉइंट पर जहां से रियल बॉडी का द लोएस्ट पॉइंट, दैट इज द ओपन. जब मैं रियल बॉडी बोलूं, इट इज दिस पार्ट जो ये वाइट है, दैट पार्ट इज द रियल बॉडी, एंड देन देयर आर अपर एंड लोअर विंग्स, करेक्ट. सो रियल बॉडी का जो एक पार्ट है, जो लोअर पार्ट है यहाँ पर, इन दिस केस दैट इज बेसिकली द ओपन. जो ऊपर का पार्ट है, दैट इज द क्लोज. सो ये पॉइंट पर दिस इज द क्लोज. सो 23,904 इज द क्लोज, 23,400 is the open, and then during the day you had highs and lows. So उस दिन का जो कैंडल में, now we have mentioned, we have spoken about candle charts multiple times. So I see continuous colors are the same despite the opening and low, and it's going low. Can you please elaborate that continuous colors are the same as in? So, okay, one thing that I would like to mention is, look at 25th November. Okay, yeah. So, okay, so I'll put it to you this way. Every time the candle color is basically dependent on the positioning of the close with regards to that day's open. Okay, so agar yeah. So that is going to be the case. So see, एक आप बात observe, एक आप बात ध्यान में रख लीजिए. जब भी आप कैंडल बोल रहे हो ना, the close comparative to the open is what determines the color of the candle. So there can be instances जहाँ पे there is a gap down, but there is a negative close, but the next day there is another gap, gap up and a negative close, followed by another gap up and a negative close. So basically you will see that the trend is going higher and higher, but the candle colors are going to be red or black. Because जब भी आप क्लोज करते हो बिलो द ओपन, सो इट इज बेसिकली अ नेगेटिव डे फॉर द मार्केट. सेम वे अगर समझिए मार्केट नीचे कंटिन्यूसली जा रहा है, देयर इज अ गैप डाउन, करेक्ट, एंड ड्यूरिंग द डे इफ द क्लोज इज अबव द ओपन, इट्स अ पॉजिटिव डे फॉर द मार्केट. सो ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज द प्राइसेस आर गोइंग अप इट इज गोइंग टू बी ग्रीन, जस्ट बिकॉज द प्राइसेस आर कमिंग डाउन इट इज गोइंग टू बी रेड. So you have to look, so जब भी आप charts देख रहे हो, you have to compare the close with that particular day's open. So I hope this clears it. Now this was an important fact that needed to be pointed out. So I hope this is clear. किसी को यहाँ पे कुछ query है? Okay, so let us take for example 28th का, correct? Now if you have access to chart, so if you have access to the charts, just stay with me. So on the 20th अगर आप देखोगे, look at the point where the market opened and look at the point where the market closed. Just a minute. Just give me a second.
या सो 28 नवंबर का प्लीज टाइप इन व्हाट हैज बीन द ओपन एंड द क्लोज. सो जो लोग ये सेशन यूट्यूब से अटेंड करें दे कैन टाइप इन कि 28 नवंबर का ओपन हाई लो क्लोज क्या था. यू कैन मेंशन द फिगर्स. No, 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 no. That is not the thing. So आपको every time you have to check what the close is with regards to the open. सो करण इट वुड बी ग्रेट क्योंकि हमारे और भी लिसनर्स हैं यूट्यूब पे, तो जो भी पर्टिकुलर क्वेश्चंस आया है तो अगर आप Yeah. रीड कर देंगे सो दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर अदर पीपल टू अंडरस्टैंड इट. Understood, understood. So okay, so हम लोग को एक query आ रही है regarding the chart colors. So can you tell me someone is telling ki if the market is going up it should be green and if the market is coming down it should be red. Okay, so elaborating to no, it's not a strategy per se. See, you are I think confusing Heikinashi and candlestick charts. So it is not a strategy per se. So आप मेरे को इतना बोल दीजिए कि 28th नवंबर का what is the open and what is the close. Okay, or if you don't want to type in the open and the close, just tell me was the close higher than the open? So there's a answer from my YouTube channel, that is Bikramjit Singh had said that 24 to 50. Okay, that is the open, correct? And close अगर आप देखोगे तो it was 23,914. So high and low का close candle color के साथ कोई लेना देना नहीं है. It is just the real body. Real body जब भी हम लोग बोलेंगे it is basically the difference between the open and the close. So there is no strategy. So please don't confuse this as a strategy. I am just showing you basic charts. Yeah. So there is absolutely no strategy. So it is not the case कि if the market is continuously coming down, the candles are going to be red. If the close is lower than the open, then the candles are going to be red. And if the open is lower than the close, the candles are going to be green. So ideally, आपको मैं ऐसे बोलता हूँ कि अगर market 24,000 पे open हुआ, 23,500 पे बंद हुआ, then the candle is going to be, please put it in the chat box. 24,000 पे open हुआ, 23,500 पे बंद हुआ. So Karan mentioned that if the market is open on 24,000 and close at 23,500, so क्या कलर रहना चाहिए कैंडल का? हाँ. Downtrend, absolutely right. Not downtrend per se. If you could tell me what would be the candle color of the candle, assuming कि positive days पे it is green and negative days पे it is red. Red color, absolutely right. Absolutely right. People are getting it right. So I hope जिसकी भी original query थी, we are able to cover his query as well, his or her query as well. Okay, so I'll assume कि query clear हो चुकी है. And one more thing that I would like to clarify here is कि high and low का candle के color के साथ कुछ भी नहीं लेना देना है. So that's good. Bikramjit said correct. So huge applause for him. Yeah. So high and low का candle के color के साथ actually speaking कोई भी लेना देना नहीं है. So you have to compare कि वो particular day पर open कहाँ था and close कहाँ था. And then based on that
you can yeah, based on that you can determine ki, whether it was a positive day or a negative day. So this was basically the entry level stuff that we wanted to cover today. This was basically something that we had. So this was basically something that we had in mind कि हम लोग आज cover करेंगे. It was basically introduction to charts. कि अगर आपको, जैसे मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि बिल्डिंग जब भी बनानी होती है आपको, you start with the foundation. Okay. So now we will take the pause here for the 30-second and so. And if you have any queries, because technical analysis is a very huge subject. Yes. Karan is CMT, that's a chart and market technician, and he has already completed the course in a technical analysis, and he is much aware कि technical analysis कैसे काम करता है. So we want to spread the knowledge about कि technical analysis होता क्या है, क्योंकि you get to know about technical analysis from many of the your colleagues or your friends. द टेक्निकल एनालिसिस, अगर ट्रेंड ऊपर जा रहा है तो जस्ट बाय करना है या सेल करना है, बट एक्चुअल में टेक्निकल एनालिसिस देखा कैसे जाता है, हिकनशी को कैसे रीड किया जाता है, आरएसआई इंडिकेटर्स कैसे प्लॉट किया जाता है, या बॉलिंजर बैंड कैसे प्लॉट किया जाता है. These are the things like we want to get into the detail of each and every like we want to I would say like the myths is there about the technical analysis, so we want to cover up the reality so that everyone will be on the same page जो भी हमारे साथ आज की डेट में जुड़े हुए हैं, and we believe कि that means we can educate you in much better way that technical analysis कैसे performed होता है. So I request that if you have any query something you can put in the chat box, so Karan will be here like to means give you the answers of those queries. So we are going step by step. Today is the introduction to the technical analysis. Next week Monday से लेके Friday तक we'll be releasing our concept of the day notifications. You will receive in your mobile phone कि technical analysis में indicators क्या होता है या support resistance क्या होता है, and then we'll be bundle up this, and on this Friday we'll take up that entire 30 minutes webinar to give you the throw the lights more in detail about that particular topic. जैसे अभी हम लोगों ने मंडे ट्यूसडे को टेक्निकल एनालिसिस मींस भेजा था सबको, देन फिर बार चार्ट्स क्या होता है, फिर उसका लाइन चार्ट क्या होता है, आज कैंडल स्टिक सबको आ जाएगा शाम तक. सो वैसे ही नेक्स्ट वीक आपको फिर से आएगा नोटिफिकेशन, जो डू नॉट मिस दोस नोटिफिकेशन, बिकॉज वहां पे आपके लिए रजिस्ट्रेशन लिंक रहता है कि जहां से यू कैन रजिस्टर इट. ऑल्सो यू कैन गो एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल. यू कैन जस्ट टाइप एक्सेस सिक्योरिटीज लिमिटेड एंड यू कैन गो इन द चैनल एंड यू कैन सब्सक्राइब इट. ऑल्सो हमारे जो प्रीवियस सेशन हुए हैं टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर या कमोडिटीज के ऊपर, you can go through it and you can revise it, you can get your this knowledge upgrade in that. So again on the next week we'll be completing about the technical analysis, the major support resistance area की कैसे बनाया जाता है, and we want you to come back with the homework that stating that कि support resistance आपको कौन से 5 stocks में दिखाई दिया next week. So next week टेक दिस एज अ होमवर्क राइट नाउ कि 5 स्टॉक्स ऐसे आइडेंटिफाई करने हैं जो अभी ब्रेकआउट पे आने वाले हैं. ओके, सो उसका सपोर्ट रेसिस्टेंस लेवल क्या है, क्या उसका बेरिश ट्रेंड रहेगा. सो आई कैन सी देयर आर द मेनी लाइक द मींस आई वुड से लाइक द ऑडियंसेस हु आर वेरी मच प्रेजेंट एंड जो हमारे की क्वेरीज भी रिजॉल्व करती हैं. सो विद दिस आई नाउ हैंड ओवर द सेशन टू करण भाई टू गिव द आंसर्स ऑफ द क्वेरी दे हैव. Yeah, so one of the questions is, does candle chart give you highs and low values? Yes, candle charts will give you high and low values. So essentially जो भी real body के ऊपर and नीचे जो भी एक छोटे से wicks आते हैं, that is basically high and low values. And then we have, okay, at what point do we look at candlesticks, at what point do we look at bar or line? So this is a very valid question. So this is basically the Nifty daily chart, correct? And अगर आपको एक smooth understanding चाहिए of what the trend is, that is when you look at line charts. अभी एक आपको ध्यान में रखना है कि line charts only take into consideration the the closing prices. So आपको एक clear picture इसमें से नहीं मिलेगा, मतलब आपको दिखेगा कि close to close market कैसे move हुआ है. But if you want a bit more detailed information, नाउ डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मतलब आपको जानना है कि उस दिन मार्केट ओपन कहाँ पे हुआ, उस दिन का हाई क्या था, लो क्या था, एंड देन क्लोज क्या था. दैट इज व्हेन यू लुक एट कैंडल चार्ट्स. सो बिफोर यूजिंग कैंडल चार्ट्स पीपल यूज्ड टू यूज बार चार्ट. नाउ ये जो आपके सामने ये जो चार्ट है, दिस इज बेसिकली अ कैंडल चार्ट. नाउ व्हाट यू कैन डू इज यू कैन सिंपली स्विच टू बार चार्ट. अभी मुझे एक बताइए कि ये विजुअली ज्यादा अपीलिंग कौन सा वाला है, इज इट अ बार चार्ट और अ कैंडल चार्ट? फॉर मी so I have been repeating this about the color change. So
the one thing you have to keep in mind is color change only happens if the I mean the color combination या जो भी आप उसको assign करते हो, that happens when a particular price or the close price, it happens only when you compare the open and the close prices. First of all, it is not a strategy. It has got nothing to do with high and low. You have to compare how the market or how the close is with respect to the open. अगर मार्केट ओपन के ऊपर क्लोज हुआ है मतलब इट्स अ पॉजिटिव डे, इट्स अ ग्रीन कैंडल. अगर मार्केट ओपन के नीचे क्लोज हुआ है मतलब इट्स अ नेगेटिव डे, इट्स अ रेड कैंडल. एज सिंपल एज दैट. Uh, line chart is certainly easy, but one thing, the problem with line chart is उसमें डेटा आपको कम मिलता है because you only have the closing prices, you don't have the open, high and low prices. So अगर एक particular डे का आपको अगर sentiment समझना है then a line chart might not be able to help you. But अगर एक say for example you are looking at the Nifty chart from 2000 to today, that is when probably a line chart will help you. So we'll take a pause here and we'll wait for your queries. So Bikramjit is having the question that's in our YouTube channel that he's a successful commodity trader. So kindly share related recommendations you have regarding the tech analytics. So surely Bikramjit, I'm sure also like we have covered the four chapters on the commodities. कि commodities basically होता क्या, what are the factors involved in the commodities trading. Second about the metals and about the energy. So these already we have covered. Last on the Tuesday we have covered about the commodity must know series, that is कि currency fluctuations कैसे आता है and how the commodity influence the market. So I hope like you have got the time and you have watched the video. So those who are attending this session first time, I again request you that you go and type in our YouTube channel, that is Access Direct. Click on this Access Direct and you will be redirected to the जहाँ पे हमारे सारे सेशंस अपलोडेड हैं. सो लाइव वाले सेक्शंस के अंदर जाना है एंड यू कैन सी ऑल द सेशंस विच वी हैव ऑलरेडी टेकन. सो कल हम लोग का सेशन हुआ था, दैट्स ऑन द फायर साइड चैट, दैट्स बिटवीन द पिक्चर ऑफ मिस्टर निशित मास्टर फंड मैनेजर ही इज. एंड परसों हम लोगों ने सेशंस कवर किया था, दैट इज ऑन ट्यूसडे आई वुड से, दैट इज ऑन द कम्युनिटी मस्ट नो सीरीज. So request all to please go and hit and like and subscribe. Also you can mention the comment that what are the most things that you are looking in the upcoming webinars so that we can cover it also. So if you have any queries, anything, then you can put in the chat box. We'll just wait for a 30-second and so. Yeah, and if there are no further queries, then we'll just end the session here. So remember one thing, that as I mentioned during the start of the session, that this the technical analysis is will be the ongoing, it's not the end today. There is a huge long way we have to go, बहुत आगे जाना है टेक्निकल एनालिसिस पे, कि टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है, एडीआर चार्ट्स कैसे रीड करते हैं, देन हिकनशी क्या होता है, जो बेसिकली लाइक बहुत लोग की क्वेरी है, आरएसआई को कैसे फॉलो करना है, इंट्राडे में अगर मैं कर रहा हूँ, या इफ आई एम अ काइंड ऑफ स्कैल्प ट्रेडर, जैसे मार्केट खुलता है 9:15 में मैंने पोजीशन खरीदा और 9:25 या 9:30 पे मैंने बेच दिया, सो दैट इज कॉल्ड योर स्कैल्प ट्रेडर्स एक्चुअली. तो उस समय क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, लुकिंग एट द टेक्निकल एनालिसिस एंड क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स होते हैं जो कि मुझे लाइक अवॉइड करने चाहिए इफ आई एम लुकिंग एट द trend, because do remember that trend is your friend, you have to follow the trend of the market. Okay, so make sure that you attend all our session that is coming on this every Friday at 2:30 p.m. It's with me a 30 minutes power pack session so that we can guide you that how the technical analysis work.
Also, every day we will be releasing the new concept that will be coming to your on the technical analysis. So अगर किसी को कुछ queries है anything, then you can put in the chat box. Yeah, I remember Vikramji that you have you have attended like means many of our sessions. I keep seeing your name, and I really love that the people are so attentive and they are coming to our session because they are liking the content that we are teaching it, and it gives us the positivity also कि जो हम लोग जिस तरह से session attend ले रहे हैं या आने वाले भी coming week में session लेते रहेंगे. So do mention in the comment box also कि अगर